If a log function is present, then what we have to do? We have to assume the log of that function is equal to log of function, in the sense log of x. If the integration of your variable is in denominator, then we have to assume that particular term is equal to simply t. Means we said that the log x is present, then we have to assume that value is equal to minus t, or if the value of your log of 1 by x is there, at the same time we have to replace the value is equal to simply t. This is the simple conversion in which we can find the simplification of your this particular integration in terms of gamma function definition. For that, if the log x is present in your integration, simply put the value of your log x is equal to t. If log of 1 upon x is present, then we have to put the value of your log of 1 upon x is equal to simply t. This is the conversion of your this particular terms is equal to t. These are the two particular substitution we have to just use to reduce our example into gamma function. Is it fine to everyone? If the log is present, means log x is present, we have to replace log x equal to minus t, and if simply log of 1 upon x is present, then we have to replace the value of that particular term is equal to simply t. These are the substitutions. And lastly, what we have to do, we have to change the limit of your integration. After replacing the value of your log x and log of 1 upon x and finding its derivative with respect to x, we get dt, we get dx. Change the limit of your integration, because the integration variable is x, we are converting into t. So replace the value of your log dx and the limit of integration. Then we get the simplification. So we will just see the example number first. You will just understand how the conversion is occur. Example number first, evaluate integration whose limit is 0 to 1 dx divided by under root x into log of 1 upon x. This is the example. This example is defined. So firstly, we have to assume the given example is equal to I as usual. And second things, we have to just observe here, the log 1 upon x is present and it is in denominator. It is not possible to find the integration. If the log x into x is present in your denominator, then it is possible by using the pi parts if the index of this both the product is 1. But what happens? The log term is present, is get multiplied with x. Again, it is inside your square root. It means the integration of such example is not possible very easily. That's why we have to convert the given particular example in any one of the type, whichever suitable. Means either it is converted into gamma function, or it is in terms of beta function, or it is possible to convert into error function, or can this example can be solved by the DUIS rule. Means we have to identify when the example is given in front of us. They don't tell us which particular method is useful to find the solution. Means we have to identify whether this example is solvable by using any one of the type or directly simplify
some substitution or not. So depends on that, we have to find the simplification. But the log 1 upon x is present. So we will just try to solve this example by using gamma function definition. So we have to put the value of 1 upon x, and that 1 upon x is equal to t because it is a 1 upon x. So log x is simply minus t, but log 1 upon x is t. So log 1 upon x equal to t, and we are just shifting this denominator x into denominator to numerator. It becomes log of x is to minus 1. And again index rule, it becomes minus, and then it is a minus log x is equal to t. The next step, what we do, we have to shift this minus sign to right hand side. We will shift this minus sign to right hand side. It becomes log x is equal to minus t, and taking exponential on both the sides because we have to find the value of x. x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या करना पड़ेगा, तो x log x को x में कन्वर्ट करना है, taking exponential on both the sides. So we get x is equal to e raised to minus, the value of your x is what, e raised to minus t. Then what we have to do, we have to just find the derivative on both the sides. Finding derivative, what we get, the derivative of your x is dx. The derivative of your e raised to minus t is minus times e raised to minus t into dt. And what we have to do, we have to just change the limit of your integration. If x is equal to 0, we know that log 0 is equal to infinity, and log 1 is equal to 0. 0 have no sign, but log 0 whose value is minus infinity, it becomes plus infinity. So we can get the simplification by putting the value of your x. This is the terms from which we can find the limit of your variable t. Then we have to make the substitution. Example is here. This example is here, and we have to just make the change in our given example. First, we have to change the limit. If x is equal to 0, then the value of your limit is infinity. So we replace the value of your limit infinity to 0. And dx, the value of your dx is what, e raised to minus t into dt with minus sign, and in a square root, the value of your x, the value of your x is equal to this e raised to minus t is replaced here, and the value of your log x is equal to what, t is replaced here. Then we have to make the simplification. So before making the simplification, our gamma function definition, whose limit goes from 0 to infinity. Whose limit goes from 0 to infinity. So we have to change the limit of your integration. When we change the limit of your integration, the lower limit into upper limit and upper limit into lower limit, the function value becomes changed. Negative in terms of positive and positive in terms of negative by using this rule. When we interchange the limit of your integration, the function's value becomes changed from positive to negative and negative to positive. That changes is reflected here. The limit is goes from 0 to infinity. The minus sign get removed because the minus become plus, e raised to minus t divided by root that contain e raised to minus t into t. We have to make the simplification. Then this e raised to minus t and t
it's shifted to your numerator, it becomes t raised to half, or e raised to t by 2 and t raised to minus half. These two value we get again. E raised to minus t and e raised to t by 2 becomes e raised to minus t by 2. Means we get these particular terms. But again, these particular terms oppose the definition of your gamma function. The gamma function definition said that the exponential function whose index is minus t, means the exponential function index is integration of variable. इंटीग्रेशन ऑफ वेरिएबल जो है आपका वो वहां पर प्रेजेंट चाहिए और उसका कोएफिशिएंट चाहिए हमें ऑलवेज -1. तो यहाँ पर -1 की जगह किस क्या आ गया है 1/2. सो वी हैव टू जस्ट रिप्लेस द वैल्यू ऑफ दिस t/2 इज इक्वल टू न्यू वेरिएबल. तो t/2 की वैल्यू हम u अजम्पशन करेंगे बिकॉज वी हैव टू कन्वर्ट दिस एग्जांपल इनटू गामा फंक्शन. तो t कितना आ गया हमारा 2u आ गया. हम डेडू ले लेंगे. We get a simplification. Again लिमिट आपका सेम रहेगा because t and u both are linear. तो t बढ़ने वाला तो u भी बढ़ने वाला है, u रिड्यूस होने वाला तो t भी हमारा रिड्यूस होने वाला है. तो डिपेंड्स ऑन दैट चेंजिंग द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन एंड जस्ट रिप्लेसिंग द वैल्यू. तो हमें क्या मिल गया, एक नया फंक्शन मिल गया. फिर से यहाँ पर नया फंक्शन मिल गया, उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे. वो u के अंदर मिल गया. अभी u के अंदर मिलने से हमें वो सिंप्लीफाई करेंगे. वी ऑलरेडी सॉ दिस टाइप ऑफ एग्जांपल्स एंड वी गेट सिंप्लीफिकेशन in this way. हमें ये simplified example मिल गया, that is a root 2 pi is the solution of your given particular example. तो ये सेकंड जो टाइप है जो t/2 की वैल्यू जो u assumption कर ली है, that examples we already saw in previous lectures. तो उस लेक्चर्स के अंदर हमने एग्जांपल सॉल्व किया है, तो वो हमें मालूम है हम सॉल्व कैसे करते हैं. तो उसकी वैल्यू हमें -t के अंदर चाहिए थी, लेकिन वहां पे -t/2 आ गया. इसलिए हमने -t/2 की जगह t/2 की वैल्यू u से रिप्लेस करके एग्जांपल को सिंप्लीफाई कर दिया है. इट्स अ वेरी सिंपल वे टू फाइंड द सिंप्लीफिकेशन. तो किसी स्टेप में डाउट है तो पूछो. यस सर. सर माइनस t/2 कैसे आया वो ऊपर? सिंप्लीफाई करने के बाद ये दोनों का इंडेक्स सेम है ना. ये देखो e का पावर -t है और e का पावर t/2 है. दोनों का एडिशन किए तो कितना आएगा? आर यू गेटिंग और नॉट? ये देखो ये स्टेप समझ में आ गई. e का पावर -t यहाँ पर नीचे कितना e का पावर -t है, लेकिन वो किसके अंदर है? रूट के अंदर है. मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है? आई विल मेंशन दैट स्टेप. तो ये क्या होने वाला है आपका? e का पावर जो -t है इट बिकम स्क्वायर रूट की वजह से वो कितना होने वाला है? e का पावर -t/2. और t का पावर कितना होने वाला है आपका? t का पावर (1/2). तो दोनों को हम शिफ्ट करेंगे ऊपर. तो नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव एंड पॉजिटिव बिकम्स नेगेटिव. तो हमें ये मिल गया उसका सिंप्लीफिकेशन. तो e का पावर जो है एक -t है और दूसरा पावर कितना है आपका? -t/2 का कन्वर्जन होने वाला है आपका पॉजिटिव के अंदर. तो उसके हिसाब से आपकी दोनों को एडिशन करनी पड़ेगी. -half एंड दैट अच्छा समझ लो. -1. दोनों के एडिशन करने के बाद सिंप्लीफिकेशन करेंगे. वेट 1 मिनट, आई विल जस्ट मेक इट. एनी डाउट? किसी को और डाउट है कि किसी को कुछ पूछो. और किसी स्टेप में डाउट है किसी को? नो डाउट. आई विल मेंशन. तो एग्जांपल पूरा समझ में आ गया सबको?
एग्जाम्पल में दो टाइप से, एग्जाम्पल के अंदर लॉग फंक्शन था, लॉग की वैल्यू थी 1/x, तो हमने 1/x की वैल्यू पुट कर दी थी t। यहाँ पे मैं वो फॉर्मूला मेंशन करता हूँ तो आपके अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए व्हाई आई मेक द चेंज। ये फंक्शन यूज किए, रूल यूज करके हमें माइनस साइन रिमूव करना है। तो ये हो गया हमारा सिंप्लीफिकेशन। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वी गेट सॉल्यूशन। और जो नेक्स्ट है ये एग्जांपल, दिस एग्जांपल आल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज दिस एग्जांपल के ऊपर, मतलब इसे जनरलाइज फॉर्मूला बोलेंगे, इसके ऊपर एमसीक्यू आपको पूछेंगे। The next example is that evaluate integration 0 to 1 x to m log x to m dx। तो दोनों का इंडेक्स यम यम दिया है यहाँ पर। हम एग्जांपल को सिंप्लीफाई करना है। जस्ट आई विल चेंज द इंडेक्स, एम तो एम कुछ प्रॉब्लम, दोनों का इंडेक्स यम है यहाँ पर। तो वी हैव टू जस्ट मेक द कन्वर्जन। फिर से हमें यहाँ पे एग्जांपल के अंदर क्या मिल रहा है, log x मिल रहा है। तो log x की वैल्यू हम कितनी रिप्लेस करते हैं, तो माइनस ही रिप्लेस करते हैं। तो वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ योर log x इक्वल टू -t। हमने -t ले लिया यहाँ पर, टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ द साइड्स। तो मुझे x की वैल्यू मिल गई e रेज टू -t, dx भी मिल गया मुझे e रेज टू -t dt, और उसका साइन आ गया माइनस। तो चेंज द लिमिट ऑफ योर इंटीग्रेशन। अगर x की वैल्यू 0 है तो आपको इन्फिनिटी लिमिट मिलेगा, अगर x की वैल्यू 1 है तो आपको 0 लिमिट मिलेगा। मतलब द लिमिट आर गेट चेंज फ्रॉम 0 1 टू इन्फिनिटी 0 एंड वी हैव टू मेक द चेंज। तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास, e रेज टू -t। तो x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया हमने e रेज टू -t, और उसका इंडेक्स कितना है यहाँ पर m। log x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो -t, और उसका इंडेक्स कितना आ गया यहाँ पर, तो m। एंड लास्टली वी हैव टू रिप्लेस द वैल्यू ऑफ योर dx। तो dx की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -e, उसका इंडेक्स -t इंटू dt। वी हैव टू मेक द सिंप्लीफिकेशन। तो e का पावर -t टाइम्स m है और e का पावर -t है, एंड वी हैव टू जस्ट रिप्लेस। इज इट फाइन? इज इट फाइन टू एवरीवन? तो ये हमने दोनों की एडिशन कर दी इंडेक्स की यहाँ पर। t का पावर कितना था हमारा, t की वैल्यू कितनी थी, माइनस, बट वी रिक्वायर्ड t रेस टू सम इंडेक्स, सो हमने -1 रेस टू m एंड t रेस टू m दोनों को हमने स्प्लिट कर दी यहाँ पर। वी गेट टू बी डिफरेंट टर्म्स एंड दिस माइनस साइन रिमेन्स एज इट इज। जो e का जो इंडेक्स है माइनस, वो यहाँ पर हमने एज इट इज मेंशन कर दिया है। उसके बाद -1 रेस टू m इज अ कांस्टेंट आउटसाइड योर इंटीग्रेशन, बिकॉज वैल्यू ऑफ योर m इज ऑड और इवन वी डोंट नो। अगर m की वैल्यू इवन है ऑड है, उसके ऊपर डिपेंड है कि आपका -1 का पावर कितना आएगा। अगर -1 की जगह 1 रहता तो 1 रेस टू एनीथिंग इज 1, बट -1 का ऑड इंडेक्स ऑड 1 आएगा, और -1 का इवन इंडेक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। एंड एट द सेम टाइम्स वी चेंज द लिमिट ऑफ योर इंटीग्रेशन। यहाँ पर इंटीग्रेशन का हमने लिमिट चेंज कर दिया, लोअर लिमिट टू अपर एंड अपर टू लोअर, द माइनस साइन गेट रिमूव्ड। अगेन वी ऑब्जर्व हियर e का पावर इज अदर देन -1। -1 की जगह यहाँ पर कितना आ रहा है, m+1। तो m+1 t की वैल्यू हमें u अजम्पशन करनी पड़ेगी। हमने उसको अजम्पशन कर दिया u के साथ, t हमने फाइंड आउट कर दिया यहाँ पर। देन वी फाइंड dt अगेन हियर एंड चेंजिंग द लिमिट ऑफ योर इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का हमने लिमिट भी चेंज कर दिया, सेम ही मिलने वाला है। अकॉर्डिंग दैट वी आर फाइंडिंग पुटिंग द वैल्यू। e का पावर है m+1, तो वो आ गया आपका -u। t की वैल्यू कितनी है हमारे पास, u अपॉन m+1, तो u अपॉन m+1 का इंडेक्स हो गया आपका m। dt की वैल्यू कितनी है आपकी, du अपॉन m+1।
then we have to make the simplification. -1 का power m as it is, and taking the common term that is a m plus 1 raised to m plus 1, क्योंकि इस टर्म के अंदर इंडेक्स कितना है हमारा, m है, और इसके अंदर इंडेक्स कितना है हमारा, तो 1 है, तो दिस बिकम्स m plus 1. तो -1 raised to m divided by m plus 1 raised to m plus 1 outside your integration, and in integration we get the two terms, e raised to minus u and u raised to m. According to definition of a gamma function, it becomes gamma of m plus 1. तो gamma of m plus 1 मिल गया हमें यहाँ पर, तो we get a final solution that is a -1 raised to m plus 1 raised to m plus 1 into gamma of m plus 1. तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला. अगर x का इंडेक्स m है और log x का इंडेक्स भी m है, तो we get this particular terms. When we change this index, हमने इंडेक्स को चेंज कर दिया, तो इंडेक्स ऑफ योर log x इज n कर दिया और x का इंडेक्स हमने m कर दिया, तो वी विल मेक नेसेसरी चेंजेस. तो हम एग्जांपल के अंदर चेंज कर, देखो साइमल्टेनियसली वी विल चेंज. यहाँ पर सपोज m है, m की जगह n मेंशन कर दिया, यहाँ पे क्या आ गया आपका, n आ गया. देन वी हैव टू मेक द चेंज. यहाँ पे आ गया आपका n आ गया, यहाँ पर आपका आ गया n, रिमेनिंग एज इट इज. -1 का पावर कितना आएगा, n आएगा. t का पावर कितना आएगा आपका, n आएगा. रिमेनिंग देयर इज नो चेंज. उसके बाद हम सिंप्लीफाई करेंगे. -1 का पावर n एज इट इज, t का पावर n, रिप्लेसमेंट करेंगे हम m plus 1 की वैल्यू, m plus 1 इंटू t की वैल्यू हम u रिप्लेस करेंगे. तो t की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे, u अपॉन m plus 1, एंड dt मुझे मिल गया. अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू मेक द चेंज. तो t की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे, u अपॉन m plus 1, उसका इंडेक्स आ गया n. देन इंडेक्स बिकम्स सिंपली n plus 1. u का इंडेक्स कितना आ गया हमारा यहाँ पर, n. Then simplification, we get a new rule is this. पर हमने दोनों के दोनों नंबर्स हमने चेंज कर दिए. -1 का पावर भी n, नॉट m. This is a very important tool for simplification of your MCQ. MCQ के लिए ये बहुत यूजफुल होने वाला है हमें. That's why we are changing the m in terms of n for making standard formula. स्टैंडर्ड फॉर्मूले में कन्वर्ट करने के लिए हमने m की जगह n रिप्लेस कर दिया, एंड दैट स्टैंडर्ड फॉर्मूला इज हियर. अगर आपके पास x का पावर m है और log x का पावर n है, then we get a simplification. -1 raised to n gamma of n plus 1 divided by m plus 1 raised to n plus 1. तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला. तो ये फॉर्मूला यूज करके आप कौन सा भी एग्जांपल यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं. तो एग्जांपल इज फर्स्ट, यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल दिया है, m की वैल्यू कितनी और n की वैल्यू कितनी, उसके हिसाब से आप उसके अंदर वैल्यू पुट कर दो. व्हेन वी ऑब्जर्व the rule and the example, the m and n both are 4. तो हमें m की और n की वैल्यू 4 पुट अप करनी है. तो -1 का पावर 4, 4 plus 1, 4 plus 1 raised to 4 plus 1. So simplification we get the 24 upon 5 raised to 5. सेकेंड एग्जाम्पल दिया यहाँ पर, m की वैल्यू है 3 और n की वैल्यू है 5. तो अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू रिप्लेस m and n. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. हर पर्टिकुलर फॉर्मूले की जस्ट को आपको याद रख के एग्जाम्पल सिंप्लीफाई करना है, बिकॉज MCQ पॉइंट ऑफ व्यू इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला. आपको एक पेज के ऊपर फॉर्मूला लिख के रहना, ये फॉर्मूला हमने इस एग्जाम्पल को यूज किया है, उसके हिसाब से आपको एग्जाम्पल ट्रू करना पड़ेगा.
और नीचे दिया है और एक एग्जांपल, दोनों का इंडेक्स 3 3 है यहाँ पर, तो ये वी गेट सॉल्यूशन। और एक एग्जांपल दिया है आपको नीचे, दो एग्जांपल्स, तो आपको मालूम है log x की वैल्यू कितनी पुट करनी पड़ती है आपको, log x की वैल्यू कितनी पुट करती है, तो -t, तो -t पुट करके एग्जांपल सिंप्लीफाई करो। These are the just simple examples. You have to just find the solution of these two example also, and it's a very important for MCQ point of view. तो डायरेक्टली आंसर पूछने वाले MCQ के अंदर हाउ दे कैलकुलेटेड, यू नो वेरी वेल। आपको मालूम है कि आपने एग्जांपल सॉल्व कैसे किया है, सॉल्व किया है, यू नो। अगर स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज किया तो आपको बोलना है कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज किया, विच इज द गामा फंक्शन।